Good morning, students. Welcome to RAKVB e-learning. In today's class, we will learn about a third chapter, that is government. Dear students, you all must be knowing about government. Have you ever heard this word in newspapers? See, here over here in your textbook, a newspaper cutting has been given. दिख रहा है? See, what are the headlines given? Can you see? Yes. So, you all must have come across the word government in newspapers, radio, TV. So, what is government? What functions does it perform? And what is its importance? Right? Why is it important and what is its important in our lives? We will study about the government in this lesson. You must be aware of the country needs a government to make laws as per its constitution, take decision and implement them. हम सबको पता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो लॉज बनाने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए और डिसीजन लिए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, where should schools and roads be constructed? Should the rates of different commodities be increased or decreased? How to ensure the electricity is supplied to everyone? Decisions such as these decisions are usually taken by government. Thus, the government performs a very important function. We come to know about the government's work through the media. Now, government कैसे डिसीजन, हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेती है. तो किस टाइप के डिसीजंस लेती है? तो कहा गया है कि वो हमारे बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट कमोडिटीज़ यानी कि चीज़ों के दामों के बारे में डिस्कशन करता है, उसके बारे में लॉज डिसाइड करता है, कहाँ स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, कहाँ रोड्स कंस्ट्रक्शन करने चाहिए. तो ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेता है. अब गवर्नमेंट ने लिए हुए डिसीजंस हमारे तक कैसे पहुँचते हैं? तो इट इज़ थ्रू मीडिया. So in this chapter, we will learn what are the functions of the government. The government is like a managing committee. Usually in a democracy, the government works as per the wishes of the people. And for their welfare, the government also takes various steps to solve economic and social problems of the people. So who takes this decision on our behalf? Government. Government, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर हम डेमोक्रेसी वाले गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक के वेलफेयर और पब्लिक की वेल विशेस और उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है. ये इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक मेकिंग लो प्राइस्ड फूड ग्रेन्स available through ration shops, assistance during disasters and calamities, establishing educational institutions and hospitals, and runs services like transport, judiciary, post, telegraph, railway, etc. The government also maintains friendly relations with our कंट्रीज़. तो यहाँ पे हमने कौन सी इंपॉर्टेंस देखी? तो कहा गया कि हमारे सारी फैसिलिटीज़ के बारे में वो ध्यान रखते हैं, जैसे कि लो प्राइस पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाना, कंट्री के और स्टेट के एजुकेशन के बारे में ध्यान रखता है, उसकी डिज़ास्टर्स और कैलामिटीज़ के टाइम पे हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन करवाता है. फिर और क्या करता है? हेज ट्रांसपोर्ट और जुडिशरी में पार्टिसिपेट करवाता है, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करवाता है. सो दीज आर द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज़. अब दो कंट्री के बीच अगर इंडिया को हम ग्लोबलाइज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें हमारी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली होनी चाहिए, अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट. नाउ क्यों इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट हमारे लिए? तो इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस क्यों है गवर्नमेंट का हमारी लाइफ में?
So it is said that the government is necessary to ensure that the law is same for everyone. It frames laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. A very important function of the government is to make rules and regulations whenever there is a public gathering. क्या क्या किस टाइप के लिए हमारे लिए गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट बनती है? ताकि वो हमारे लिए एक ऐसा लॉ बनाए जो सबके लिए सेम हो। वो लॉज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाता है ताकि इट फ्रेम्स लॉज एंड सीज दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड पुलिस। ये भी ध्यान रखता है कि जो लॉ हमने बनाया है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। A very important function of the government is to make rules and regulation whenever there is a public gathering. वो कब rules and regulations बनाए? जब public gathering हो। Government thus plays a vital role in maintaining law, order and peace. वो क्या करता है? Maintain law and order, यानी कि जो लॉ बना है उसको फॉलो करवा और मेक श्योर करता है कि कंट्री के डेवलपमेंट बहुत पीसफुली और अच्छे से हो रहा हो। नाउ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब एक ही गवर्नमेंट हर जगह तो काम कर नहीं सकती, इसीलिए गवर्नमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज़ इन डिफरेंट फील्ड्स। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दीज? India is a vast country, right? If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizens will also face inconvenience. अगर सिर्फ एक ही बंदा ऊपर से टॉप से ही अगर ऑर्डर्स पास हो रहा है और सिर्फ वही मैनेज कर रहा है पूरी कंट्री को, तो देश में और उसकी पब्लिक के बीच में, सिटीजन्स के बीच में क्या होगा? इनकन्वीनियंसी अराइज होगी। सो government works at different level: local level, state level and national level. Local level is at the district level, state level यानी कि हर स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट, एंड नेशनल दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद अफेयर्स ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़। लोकल गवर्नमेंट किस चीज़ का ध्यान रखती है? विलेजेस एंड सिटीज़, जिसको हम ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। State level government deals with matters of the state level, while the government at the national level is responsible for the work related to entire nation. State level अपने state के welfare के बारे में देखता है, और union government that is the national government, वो national level पे जो government है, union government, वो country as a whole decision लेती है। You have already studied about local level and will learn about the state government in the next unit. In next class, you will learn about national government, that is the central union government. The government and law. The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. अब government जो भी laws बना रही है वो हर एक citizen को compulsorily obey करना ही पड़ेगा। Law and order is very important for the proper functioning of the government. अगर गवर्नमेंट आप चाहती हो कि अपनी कंट्री का जो गवर्निंग सिस्टम है वो स्मूथली चले, तो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर all of us to follow all the rules and regulations that are made by the government. The government has the authority to make as well as implement laws. गवर्नमेंट के पास laws बनवाने की और लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की भी अथॉरिटी है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यू मस्ट हैव अ टिकट while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a penalty or go to jail. ऐसा कभी हुआ है कि जो बंदे के पास ट्रैवल करने की अपनी खुद की टिकट नहीं है, उसको गवर्नमेंट आइदर पेनाल्टी पे करवाती है और आइदर उसको जेल होती है? तो व्हाट इज माय कंसर्न ओवर हियर कि आई एम आस्किंग कि इवन दो द गवर्नमेंट मे वर्क लॉफुली इन केस सिटीजन दैट, तो ये डिसीजन किसने लिया कि उसको पेनल्टी और जेल हो सकती है? तो ऑब्वियसली दिस वाज अबाइडेड बाय द लॉ. So even the government may work lawfully in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice
और इवन गो टू कोर्ट. नाउ गवर्नमेंट के पास तो ये राइट है कि वो सिटीजन से लॉफुली एक्ट करे और उसके लॉज को फुलफिल करवाए. बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर पब्लिक को उसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? दे कैन इवन गो टू कोर्ट. द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स. तो गवर्नमेंट, जो कोर्ट है, वो गवर्नमेंट को भी अबाइड कर सकती है नए और सही डिसीजंस लेने के लिए. Organs of the government. You must have realized that the organization is responsible for proper functioning of the country. And such organization which is responsible for proper functioning of the country is said to be government. Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. The government frames acts and laws and ensure the proper execution. गवर्नमेंट क्या करती है? लॉज और एक्ट्स को फ्रेम करती है और मेक श्योर करती है कि ये इम्प्लीमेंट भी सही से हो रही है या नहीं. It sees to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensure that justice is done. वो भी ये भी ध्यान रखना है कि लॉ तो इम्प्लीमेंट अगर हो रहा है तो क्या वो जस्टिसफुली हो रहा है या ज़बरदस्ती हो रहा है. So it sees to it that this law is suitably interpreted and implemented, also ensures the justice. The three arms of the government are to legislate, to execute and to impart justice. यानी कि वो legislate यानी कि वो खुद laws को बनाता है, वो make sure करता है कि law execute यानी वो law implement हो रहा है या नहीं. It also makes sure that the law, according to that law, justice is also given to the public. The arm that frames law is known as legislature, that is Vidhan Sabha. The law which executes law, the organ which executes law is executive, and the arm which works towards implementation of justice is said to be judiciary. And it takes action against the offenders. और ये एक्शन भी लेता है अगर किसी ने ये लॉज को ऑफेंड किया है तो. India is a vast country made up of of different states. The constitution has made India into a union of states and for the smooth functioning of the administration. Thus, India is a federal state. Now, a federal state यानी कि India is not only about one state. India is a country which has unity in all its state. तो ये स्टेट को एक फेडरल स्टेट इसलिए बना दिया गया है ताकि गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को स्मूथली रन कर सके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली कर सके. द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट किसके बारे में ध्यान रखती है? तो पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. We will study more about the organs of state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses. The lower house is legislative assembly and the upper house is legislative council. अब legislative body के भी दो पार्ट है, एक legislative assembly और एक legislative council. The governor is also the part of state government. The state of the Gujarat has only the lower house. Most of the states do not have a legislative council. तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी है जिसके पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. See, look at this diagram given to you. A state government is given. State government runs its governing body through three parts. लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियरी. तो लेजिस्लेटिव कौन था? द वन हु मेक्स द और फ्रेम्स द लॉ. तो उसके दो पार्ट्स है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी की अगर हम बात करें तो वो है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के कंट्रोल में. अगेन जुडिशियरी इज इन द हैंड ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स.
So, in this chapter, we learned about our government. How does our government frame the law, make the law, and governs the country very smoothly. I hope you all have enjoyed the chapter and understood it well. You also have to write down the answers in your workbook whenever it is being updated. Thank you, children. Have a nice day. Be safe.